राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर्स अनूप कौर और मुनीश जॉली के साथ आपका अभिवादन करता हूं। साथियों, 3 वर्ष से भी ज्यादा के समय के बाद यहां पर एक बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत सेरेमनी होने वाली है, जिसे हम कहते हैं द चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी। 1773 से प्रेसिडेंट की जो बॉडी गार्ड है, जो भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट कही जाती है, और इनका यहाँ पर प्रदर्शन होगा। कुछ ही पलों में महामहिम राष्ट्रपति हमारे बीच होंगी और ये महत्वपूर्ण पल हमारे ठीक सामने राष्ट्रपति भवन, ऊपर सांची से प्रेरणा लेकर इसका एक तरह से डोम बना हुआ, और उसके साथ ही यहाँ पर 10 कॉलम जो कि भरतपुर के पत्थर से बनाए गए हैं, और साथ ही फतेहपुर सीकरी से जो रेड सैंडस्टोन है उससे इस इमारत का निर्माण हुआ है। ये भव्य फोरकोर्ट, और कुछ ही पलों में यहाँ पर समारोह प्रारंभ होगा। अनूप। Good morning, wonderful listeners. I, Anup Kaur, with my fellow commentators Munish Jolly and Mahendra Singh Lalis, join you in this very special broadcast from the Forecourt of RashtrapatiBhawan, New Delhi. We are witnessing here the change of Ceremonial Army Guard ceremony between the 6th Battalion of the 6th Regiment and the 1st Battalion of the 5th Gorkha Rifles. The sun is out and shining bright, warming many a heart and exuding the much-awaited warmth after months of a bone-chilling winter spell here in Delhi. And in stark contrast to the red gravel of the forecourt, one can see the regal facade of the Rashtrapati Bhavan in pink and cream sandstone. The forecourt, which is going to be the center for today's ceremony, is T-shaped and has 31 steps leading up to a veranda, which gives way into the main building. On top of these steps, there are 12 big pillars, between which are placed huge pots with decorative plants, and right in front of these are also flag stands displaying the regimental standards of the outgoing and incoming guard battalion. One yellow in color and the other green in color. Running down through the center of the steps, all the way from the top to the bottom, I can see the red carpet, both sides of which are lined with beautiful flower arrangements in brass pots. And as we sit facing these steps, to the left of the carpet, on the steps is stationed the band from the Mechanized Infantry Regimental Center, Ahmednagar, led by Bandmaster Subedar Major Shantaram Badkar. And to the right is the pipe band of the 1st Battalion of the 5th Gorkha Rifles, led by Subedar Thaman Singh Ale. The top of the Rashtrapati Bhavan has a dome hoisted on which is our pride, our national flag, fluttering majestically in the wind. And right below it, on the parapet, are positioned 4 buglers, 2 from the 6th Battalion of the Sikh Regiment and 2 from 1-5 Gorkha Rifles, who have the enviable task of announcing the Honorable President's arrival. Munish, do you know the incoming battalion, that is the 1st Battalion of the 5th Gorkhas, are also sometimes referred to as the Fast 5th? Yes, they are. As the command comes in, we'll talk about the details of the battalions. The Sikh Regiment on the left side of the formation, the Gorkha Rifles on the right side of the formation right in front of us. And here comes the carcade of the Honorable President, Smt Droupadi Murmu ji, from our right. Very slowly and gently the carcade now moves, turns a 45-degree towards the right, and will head towards the dais where the Honorable President will get seated. But before that, she'll get a command. The buglers atop the terrace now blow the bugle. As we see, the carcade now comes right in front of the dais. And here comes the Honorable President, Smt Droupadi Murmu, steps out of the car and now heads towards the dais, climbs the stairs, 3 stairs, and now faces the 2 battalions placed in front of her.
just witnessed the national anthem being rendered, the national salute being given to the Hon'ble President, Smt Droupadi Murmu. A beautiful sight here at the Forecourt of the RashtrapatiBhawan. And here we see the parade commander, Colonel Ganesh Shankar Vidyarthi, taking a few steps ahead towards the Honorable President. The Honorable President, Smt Droupadi Murmu, now being invited to inspect the parade. We can see the ceremonial gypsy now driving up to the dais. The dais beautifully carpeted in red with a golden chair right in the center for the Honorable President. The ceremonial gypsy right in front of the dais right now, and it is being driven by Havildar Daler Singh. As the Honorable President climbs up the jeep, she is assisted by the military secretary to the President, Colonel Ranjit Singh Manral, as the jeep now goes right in front of our commentator's box at the forecourt, the majestic forecourt. Moves towards our left as the jeep of the Honorable President. Takes a 45-degree right towards the President Bodyguards Mounted Regiment, the 11 horses and the elite President's Bodyguards, witnessing the jeep going right in front of them. Absolutely, Munish, and we can see the President's bodyguard turned down in the ceremonial red attire with the gold girdle, and you can now hear the band playing and the Honorable President now moving up in front of the Sikh regiment, commanded by Major Vikas Sangwan, who is the contingent commander right now. और राष्ट्रपति महोदय अब सिख रेजिमेंट के बाद गोरखा राइफल्स फर्स्ट बटालियन उनका निरीक्षण करती हुई, जिसे कमांड कर रहे हैं मेजर अर्जुन सिंह. And the two bands, one from the Mechanized Infantry Regimental Center Military Band, headed by Subedar Major Shantaram Badekar, and the band from the Gorkha Rifles, headed by Subedar Thaman Singh Ali. The 1st Battalion of the 5th Gorkha Rifles Frontier Force turned out in the ceremonial olive green dress with red and green striped kamarbands, on top of which we can see the black belts with shining silver buckles. The red formation sign can be seen on the left shoulders, and adorning their khaki color hats with black chin straps, slightly tipped to the right, we can see them wearing black shoes with black spats and red lanyards. The Honorable President, in her ceremonial gypsy, proceeding once again towards the dais after inspecting the parade. महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अब वापस निरीक्षण स्थान तक, अपने स्थान तक लौटती हुई, राष्ट्रीय ध्वज उनकी जिप्सी पर, उन्होंने एक हल्के नीले और साथ में चांदी के कलर की साड़ी पहनी हुई, और वे इस वक्त अपने वाहन से नीचे उतरकर डायस की तरफ जाती हुई. ये भव्य समारोह, हम ये बता दें कि इससे पूर्व लगभग 3 वर्ष पहले 28 नवंबर 2020 को हुआ था, जब 5वीं बटालियन गोरखा राइफल्स जो है, उन्होंने ये सौंपा था 6 बटालियन सिख रेजिमेंट को, और 3 वर्ष के बाद अब आज ये समारोह आयोजित हो रहा है. We can also see the 6th Battalion of the Sikh Regiment turned out in their green Angola dresses, white spats, black shoes, red and yellow kamarbands, yellow scarves, red turbans with a steel chakra on the turban, which has a major history to it, which I will share with you time permitting. And that's a command where we also see the Sadhan and Vishram. That's the Vishram, and then the Sadhan command.
सलामी देते हुए 6 बटालियन सिख रेजिमेंट की, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मेजर विकास सांगवान। और अब बारी 1st बटालियन 5वीं गोरखा राइफल फ्रंटियर फोर्स की। वे दे रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति को सलामी। With that outstanding word of command, the contingents have formally acknowledged. And that was the command that came, and now the marching to meet 2 contingent commanders, Major Vikas Sangwan of the Sikh Regiment, Major Arjun Singh of the Gorkha Rifles, walking towards the center of the formation. We are now moving in towards the next important stage in the ceremony, that is the handing taking over of duties between the old guard commander and the new guard commander. On the left hand side we can see the table toli, which is already in waiting. The table toli comprises of 4 soldiers, 2 from the incoming regiment and 2 from the outgoing regiment. We can see a table being held over there by these 4 soldiers, and this table is covered with green cloth with the golden endowments on the center. टेबल टोली हमारे सामने से जाती हुई, इसमें 4 सैनिक हैं। 2 सैनिक जो आगे हैं वे है 6ठी बटालियन सिख रेजिमेंट के, जो आज अपना कार्यभार सौंपेगी पहली बटालियन 5वीं गोरखा राइफल्स को। उनके दोनों सैनिक पीछे इस टेबल को आगे ले जाते हुए एक औपचारिक लेकिन बहुत ही सुंदर समारोह और महामहिम राष्ट्रपति के सामने टेबल टोली अब पहुंचती हुई। That's Sipahi Shagandeep Singh and Lovepreet Singh of the Sikh Battalion, and Lance Naik Ankit Singh and Rifleman Anjan Thapa of the Gorkha Rifles. The table now placed right in front of the dais where the Hon'ble President Droupadi Murmu ji is seated. The 4 soldiers place the table. Atop is the register, the book, which will be signed. The keys would be handed over to the regiment that's taking charge, and that's the Gorkha Rifles. Absolutely right, Munish, and this is a handing taking over ceremony that is very symbolic. The outgoing guard handing over the key to the RashtrapaTibhawan to the incoming regiment and signing formally on the register that's kept on the table over there. हाथ मिलाते हुए इस वक्त कर्नल गणेश शंकर विद्यार्थी बाईं तरफ और दाईं तरफ कर्नल सिद्धार्थ टूकिया एक दूसरे को अब चाबी सौंपते हुए। Absolutely, the golden key over there being exchanged between the 2 commanding officers. A solemn moment steeped in tradition. कर्नल सिद्धार्थ ढूकिया उद्घोषणा करते हुए माननीय राष्ट्रपति जी के सामने कि हमने अब इस रक्षा का चार्ज ले लिया है। बहुत ही सुंदर दृश्य और अब वे हस्ताक्षर करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के सामने। And that's Colonel Ganesh Shankar Vidyarthi and Colonel Siddharth Dhukia of the Gorkha Rifles signing the book, giving that salute. They turn around and walk to their respective positions. You know, Manish, what caught my eye is the kukri that is buckled up to the belt worn by each soldier of the Gorkha Rifles. A kukri which is their pride. It is encased in a leather jacket that is fastened to the belt which is tied upon the kamarband. The table toli now marching back towards the table, taking their positions, saluting the Honorable President, the Supreme Commander of the Armed Forces, and holding on to the 4 edges of the table and very smartly moving away from the center of the forecourt. अनूप, जब ये टेबल टोली यहाँ पर प्रवेश कर रही थी तब सिख रेजिमेंट के सोल्जर्स आगे थे और अब जब ये वापस लौट रही है तो चूंकि
फर्स्ट बटालियन जो गोरखा राइफल्स की फ्रंटियर फोर्स उसने अब चार्ज ले लिया है, वे अब आगे हैं और इस टेबल को हमारी बाईं तरफ राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट की दाईं तरफ ले जाते हैं। Absolutely, Mahendra, and that is symbolism in each and everything that's happening here on the forecourt. Well, the announcements are also made here. The on-floor announcements, we see a lot of children assembled here, Ceremonial Army on whose shoulders rests the future of our great country, our great nation. Is commanded by Colonel Siddharth. Kids on my right side giving a smile to the men in the uniform. Officers Training Academy, Chennai. Colonel Siddharth Dhukia. कर्नल सिद्धार्थ ढूकिया जो कि कमांड कर रहे हैं इस वक्त जाते हुए। कर्नल सिद्धार्थ ढूकिया जो है भारतीय सेना के एक काबिल अधिकारी हैं और उन्होंने बहुत सारे मोर्चों पर भारतीय सेना के लिए कार्य किया है। ये 1/5 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स में मार्च 2007 में कमीशन हुए थे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में, और टेक्निकल स्टाफ कोर्स आपने किया था मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे में। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैदराबाद में भी आप रहे, लाइन ऑफ कंट्रोल और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन नॉर्थ ईस्ट में भी आपने काम किया, और इसके अलावा स्टाफ ऑफिसर इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप में भी रहे। अब दोनों बटालियन के सैनिक आगे आते हुए और महामहिम राष्ट्रपति के सामने अपना सम्मान प्रदर्शित करते हुए। Colonel Dhukia leading both the contingents, moving a bit forward towards the saluting days, and the Hon'ble President now taking the salute. To be followed by the national anthem. Spectacular forecourt with the armed forces saluting the Supreme Commander of the Armed Forces of India, the President, Smt Droupadi Murmu, as they give the Baju Shastra just now, bringing their weapons down. We have witnessed the change of guard ceremony over here, the baton being passed on to the new regiment, that is the 1st Battalion of the 5th Gorkha Rifles, and we can see the podium being now carried to the saluting days. The podium with 2 microphones signaling that the Honorable President is now going to be addressing one and all gathered here at the forecourt of the RashtrapatiBhawan. 5वीं गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन आज यहाँ पर इस समारोह में राष्ट्रपति भवन के सुरक्षा का चार्ज लेते हुए महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आर्मी गार्ड बटालियन के चेंज ओवर समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और स्वजन, आज इस चेंज ओवर समारोह में भाग लेकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सिख रेजिमेंट की 6th बटालियन के स्थान पर आप 5वीं गोरखा राइफल की प्रथम बटालियन राष्ट्रपति भवन में सेरेमोनियल आर्मी गार्ड बटालियन की भूमिका निभाएगी। आज अपना कार्यकाल पूरा करने वाली 6 सिख भारतीय सेना की युवा और अनुशासित बटालियन है। इसकी स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी। अपने 62 वर्षों के गौरवपूर्ण इतिहास के दौरान इस बटालियन ने विभिन्न ऑपरेशनल एरियाज और फील्ड कार्यकाल में साहस, त्याग और सर्वोच्च बलिदान की मिसाल पेश की है। मैं कर्नल गणेश शंकर विद्यार्थी तथा 6 सिख के अधिकारियों और सैनिकों की
सराहना करती हूँ। इन्होंने नवंबर 2020 से अभी तक अपनी जिम्मेदारी की पूरी निष्ठा से निभाई है। सशस्त्र सलामी दिए जाने के हर एक अवसर पर, चाहे वो हमारे देश की यात्रा पर आए राज्य के अतिथियों के सम्मान से हो या फिर मेरे राष्ट्रपति भवन में आने जाने के दौरान हो, 6 सिख के जवानों की ड्रिल विभूषिका और अनुशासन उत्तम स्तर पर रही है। मैं सैन्य परंपराओं के उच्च आदर्शों का प्रदर्शन करने वाले इस बटालियन को हार्दिक बधाई देती हूं और सफल भविष्य की कामना करती हूं। आज कार्यभार ग्रहण कर रहे 5वीं गुरखा राइफल्स की प्रथम बटालियन का मैं राष्ट्रपति भवन में स्वागत करती हूं। आज से आपको राष्ट्रपति भवन के सेरेमोनियल आर्मी गार्ड बटालियन की अत्यंत गौरवपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। मुझे बताया गया है कि इस बटालियन का 166 साल का गौरवशाली इतिहास है। स्वाधीनता के 50 गोरखा बटालियन ने 1947 और 1971 में के युद्धों में और अनेक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में हिस्सा लिया तथा कोई पदक, बैटल ऑनर और थिएटरी ऑनर अर्जित किए हैं। मुझे विश्वास है कि अपने देश के बहादुर और निष्ठावान सैनिकों के रूप में जो पहचान बनाए हैं और उसे बनाए रखते हुए आप राष्ट्रपति भवन में भी अपना अलग छाप छोड़ेंगे। मैं 5वीं गोरखा राइफल की प्रथम बटालियन के कर्नल सिद्धार्थ ढुकिया तथा अन्य अधिकारियों और जवानों को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं यहाँ उपस्थित दोनों बटालियन के अधिकारियों, सैनिकों, उनके परिवार के सदस्यों और सेनानिवृत्ति सैनिकों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। The Honorable President complimenting both the regiments, the Sikh and the Gurkha Rifles, the outgoing 6th Battalion of the 6th Regiment and the 1st Battalion of the 5th Gurkha Rifles. She complimented the contributions, spoke about the history and also complimented the parade commanders, Colonel Ganeshankar Vidyarthi of the 6th Regiment and Colonel Siddharth Dhukia of the Gurkha Rifles, who have taken the charge, and they'll be with the Honorable Rashtrapati Ji for the next tenure. The Honorable President just addressed one and all gathered here at the forecourt, and the podium has now been moved away from the saluting dais, and we shall very soon be witnessing the incoming battalion's commanding officer, Colonel Siddharth Dhukia, marching in and inspecting the parade. The infantry units from different units of the army function as the Ceremonial Army Guard in the Rashtrapati Bhavan by rotation. They perform various ceremonial duties at various important events like the Guard of Honors to the dignitaries, the Republic Day Parade, the Independence Day Parade, the Beating the Retreat ceremony, apart from performing ceremonial guard duties at the Rashtrapati Bhavan. कर्नल सिद्धार्थ ढूकिया इस वक्त महामहिम राष्ट्रपति के सामने उन्हें सलामी देते हुए, ये बटालियन 22 मई 1858 को बनाई गई थी और दूसरे सेकंड एंग्लो अफगान वार में भी जो पहली बटालियन है 5वीं गुरखा राइफल की, इन्होंने बहादुरी का परिचय दिया था और इनका निशान है शौर्य एवं निष्ठा। The Nishan Toli now walks towards the Honorable President, led by Naik Bhupinder Singh, Naik Simranjeet Singh. The Nishan carrier is Major Inderjeet Sachin of the Sikh Regiment. मुनीश, नमक, निशान और नाम के लिए सैनिक लड़ते हैं और निशान बहुत महत्वपूर्ण चीज़, और हर सैनिक के लिए जब निशान उसके सामने आता है तो उसे सैल्यूट करना, उसे सम्मान देना अनिवार्य है।
we can see the Nishan Toli now moving out with the Nishan of Chase Sikh, very smartly being carried out by Major Inderjeet Sachin. Behind us are the other members of the Sikh regiment saluting the Nishan, and that's the tradition of the Sikh regiment. In fact, we can see Munish, everybody in the audience, including us, has got up as a mark of respect to the flag. Colonel Siddharth Dhukia. The national anthem played by the command given by the parade commander of Gurkha Rifles, Colonel Siddharth Dhukia. Baju Shastra now. And we saw almost every men in uniform saluting while the national anthem was on, as the carcade now comes from our left towards the right, going towards the dais of the Hon'ble President. माननीय राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के सामने अब उनका वाहन आता हुआ, जिस पर राष्ट्रीय ध्वज लहराता हुआ, और राष्ट्रीय सैल्यूट के बाद अब वे उसमें विराजमान होती हुई और इस औपचारिक समारोह में अपनी गरिमामयी उपस्थिति के बाद प्रस्थान करती हुई. The carcade of the Honorable President, Smt Droupadi Murmu, arrived a few seconds ago. The Honorable President is now seated in her vehicle and will be moving out slowly from the forecourt of the RashtrapatiBhawan. It's been a full cycle here that's been completed. It was way back in November 2020 that the present Chesik had taken over the ceremonial duties from the 5th Battalion of the 1st Gorkha Rifles, and today, that is the 11th of February 2024, they are handing over the baton, handing over the ceremonial guard duties to the 1st Battalion of the 5th Gorkha Rifles, the Fast 5th. Well, as another carcade comes in, and that's for none other than the Military Secretary Colonel Ranjit Singh Mandral. The command coming for the Military Secretary by the Parade Commander Colonel Siddharth Dhukia of the Gorkha Rifles. The command is to turn right as we see the mounted regiment of the President bodyguards now leaving the forecourt from our left and right. The 11 horses on each side. And here the marching out of the Sikh regiment. Right in front of us, they move towards the left, and that is where the Sikh regiment will exit. As the dhun comes in, Sare Jahan Se Acha, Hindustan Hamara. We are proud of our country. The tricolor flies high, fluttering atop the dome of the RashtrapatiBhawan, the majestic forecourt. The two contingents now marching towards the south court. We can see the Chase Sikh with their 75 troops in their contingent taking the lead, followed by the contingent from the Gorkha Rifles. What a beautiful sight indeed. Vibrancy, discipline, utmost determination and grit being displayed in every move. Following them out is also the MIRC band, and coming down the steps are the pipe band.
the pipe band swinging along as they play the tunes. And what fascinates me is the motto of the Sikh regiment, Na daru aru so, jab jaऊं मैं लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं. बिल्कुल मुनीश, अब दोनों रेजिमेंट्स जो जाने वाली हैं और जो आ रहे हैं वो अब राष्ट्रपति भवन के भीतर प्रवेश करते हुए, जहां महामहिम राष्ट्रपति औपचारिक रूप से उनसे मिलेंगी और सारे जहां के बाद अब ये गोरखा राइफल्स का बैंड धुन बजाता है. Absolutely, and the Gorkha Rifle band moving left to right, their bodies swinging with the tunes, the mace stick being flung by the bandmaster up into the air and being caught with precision. And that has brought everyone onto their feet. We can see the audience getting up, craning their necks, taking a look at both the contingents moving towards the South Court. It's been an amazing ceremony, solemn, yet filled with momentous moments over here at the forecourt of the Rashtrapati Bhawan. हम आपको ये बता दें कि आज राष्ट्रपति भवन में सेरेमोनियल चेंज ओवर था आर्मी गार्ड बटालियन का, जिसमें 6ठी बटालियन सिख रेजिमेंट की उन्होंने कार्यभार सौंपा. फर्स्ट बटालियन 5वीं गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स को. और ये समारोह हम यहाँ से आप तक आकाशवाणी के जरिए लाइव पहुंचा रहे हैं. और ये बता दें कि इस समारोह के बाद हम कुछ ही पलों में आपको समाचार भी सुनवाएंगे. फिलहाल अपनी पूरी आकाशवाणी टीम के साथ अपने को कमेंटेटर्स अनूप कौर, मुनीश जॉली और टेक्निकल टीम जो हमारी है नरेंद्र नाथ, कमल सिंह, बाबूलाल मीना, हेमराज मीना, अतुल कुमार और प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ मैं महेंद्र सिंह लालस आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो. अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित चेंज ऑफ गार्ड समारोह का सीधा प्रसारण. आंखों देखा हाल सुना रहे थे महेंद्र सिंह लालस, मुनीश जॉली और अनूप कौर. यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया.